So how many of you are giving mains अभी यहाँ पे? Fine. और आपने ऐसे के लिए कुछ किया है, मतलब have you identified your problem, like when you write essay, any area that you find is challenging? क्या आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हाँ, पेस्टल अप्रोच क्या होती है? आई डोंट नो. अच्छा, फाइन. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will focus on philosophical essays. हालांकि I expect कि those who are giving exam this year, they should also be preparing essays on 3 more topics like women always rules वहां पे रहता ही है, and then environment और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब पेपर का तो ट्रेंड बदल ही सकता है, तो उस पे भी ट्राई टू प्रिपेयर. अब फिलोसफिकल एसेज, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand that this is the only paper where you are very free to write. Fine. Here you cannot adopt any specific style. Fine. So this is not general studies paper. This is an essay paper, and don't फॉलो एनी स्टाइल. ठीक है, तो अभी का जो राइटिंग ट्रेंड है उसमें कोई स्टाइल मैटर करता नहीं है, और प्री डिफाइंड फॉर्मूले से नहीं जाना है. बिकॉज द वे ही सेइंग पेस्टल अप्रोच और वॉट एवर अप्रोच, कि हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखें, हम उसका सोशल लिखें, लेकिन हर टॉपिक ऐसा नहीं होगा. एवरी टॉपिक इज यूनिक इन इटसेल्फ. फाइन. तो बिफोर लुकिंग एट एन एसे देर इज नो नीड टू प्री प्लान. फर्स्ट लुक एट एन एसे एंड देन डिसाइड, एंड देर इज नो राइट वे ऑफ डूइंग, नो लेफ्ट रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट. कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कुछ बेसिक चीजें फॉलो करनी है. फिलोसफिकल एसेज में इज, आर यू एबल टू डीकंस्ट्रक्ट द टॉपिक. सबसे पहले टॉपिक का डीकंस्ट्रक्शन करना है. यू शुड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट. नाउ सेकेंड, philosophical essays means reflective essays. Reflective essays means what? You have to go deep into and see what is the hidden meanings, what are the deeper meanings. एक फिलोसफिकल एसेज है और एक ऑर्डिनरी एसे है. यानी कि जो फिलोसोफर है या उसके एक्सपेक्टेड क्या है, दैट पर्सन शुड बी एबल टू सी मच डीपर देन व्हाट अदर्स हैव नॉट सीन. मतलब थोड़ा डिफरेंट लेवल पे जाके, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर जाके करना है. अब नेक्स्ट है, यू ऑल नो, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है और कंक्लूजन पार्ट होता है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको व्हाट दिस एसे इज अबाउट एंड हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप द एसे एंड इट्स आर्ग्यूमेंट्स, एंड कंक्लूजन इज on the basis of this analysis what position are you going to take on this particular issue. तो सिंपल रखो, पहले से कोई माइंड पर प्रेशर नहीं रखो कि ऐसे लिखना है, ये पैटर्न है. कोई पैटर्न नहीं है. यू कैन सेट अप अ पैटर्न. ठीक है. आई होप यू ऑल रिमेंबर वंस आई टोल्ड इन द क्लास अबाउट रूसो. फाइन. So there was an essay competition
on the role of science and enlightenment, everybody wrote in favor, but Rousseau wrote in the other way. Still he got the prize. Fine. So essay is reflective essay is trying to understand your approach of understanding the things. Now there can be n number of topics you can't prepare. The only thing is you should develop capacity to think about it. Normally, what are the trends in philosophical essays? The normal trend is dealing with the normal philosophical questions. What philosophers have dealt. One very fundamental question of philosophy is always, what is life? What is the purpose of life? What is the meaning of my existence? And how should I fulfill my existence? तो existential questions होते हैं, पर्सनैलिटी रिलेटेड कोई ट्रेट होता है, उसके ऊपर आपके थिंकिंग को वो सोचते हैं. ठीक है. तो टुडे हमेशा इफ जस्ट what is expected, write in an orderly fashion. Orderly fashion क्यों चाहिए? इसलिए so that the person you are making the reader comfortable, और आपके आइडियाज में एक इवोल्यूशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इवोल्यूशन लिख रहे हैं, सपोज आई टॉक अबाउट इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, तो एक उसमें कोहेरेंस होना चाहिए. ईदर आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड रीच बैक, or I start from beginning and then reach. It should not be haphazard. Fine. And write precisely. Credit will be given for effective and exact interpretation. Yeah, exact expressions. What is required, you write. How will you make it effective? What is effective representation? नो यस. अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल्स देते जाओ, ठीक है, और इंटायर एसे यू फिल विद एग्जाम्पल्स. बट टेल मी, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, गिविंग 10 एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग, और गिविंग 3 एग्जाम्पल्स, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक? आर दे आस्किंग यू टू कीप ऑन इलस्ट्रेटिंग? Are they asking you to show economic social dimension, even if it is not? So treat every topic as a unique topic. Think with fresh mind. Don't have any predefined pattern. Keep it unpatterned. Fine. So now I will deconstruct some topics today, and we will do the brainstorming, like how a essay has to be approached. This is previous year, and then we will discuss few these questions. So now 22, this question came, time to repair the roof is when the sun is shining. So how will you deconstruct? इस particular topic का meaning क्या हुआ? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ठीक है. तो टाइम टू रिपेयर द रूफ, मतलब टाइम मैटर्स. एक ब्रॉड इशू इसमें प्रिपेयर्डनेस का है, हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन का एक इशू है. एंड टाइम टू रिपेयर द रूफ, रूफ सिंबलाइज व्हाट? शेल्टर. Is when the sun is shining. Sun is shining is when it is a good time. Then itself you make preparations. Fine. And then the question is, time to prepare means time is changing. ठीक है. तो normally
टाइम इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, फिलॉसफी ऑफ टाइम एक फिलोसफिकल क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलॉसफी ऑफ टाइम, concept of time. Even if you see, the second question is almost same. You cannot step twice in the same river. Fine. तो अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में what is the essence of this particular question? The importance of preparedness in life, or that the time keeps on changing. Why do you have to prepare? Why do you have to prepare? And you have to prepare for what? Fine. So the basic thing is, the question is related to the concept of time. What do you know about concept of time? पहले कैसे हम इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, तो हमें इसका की पता चल गया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस. बट it is not just importance of preparedness, it is more about adversity and what should be person's approach towards adversity. Fine. So but here time concept is there. तो टाइम से आप कैसे, इसमें पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करिए कि हमको पहले एसेंस आइडेंटिफाई हो जाए. ठीक है, दैट द स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी, और दिस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू अ सेइंग दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द बैड टाइम. So when we are talking about bad time, हमेशा जो वर्ड होता है उसका एक अपोजिट यू हैव टू थिंक. फाइन. तो when we are talking about the bad time, it means there will also be a good time. When there is a good time and bad time, means time changed. ठीक है. तो टाइम की फिलॉसफी के पीछे जो सेंट्रल आइडिया क्या है? कंसेप्ट ऑफ चेंज. ठीक है. तो व्हाट इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस वर्ड? दिस वर्ड इज अ वर्ड ऑफ चेंज. फाइन. सो इन दिस वर्ड इज अ वर्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस. ठीक है. और टाइम में चीजें जा रही हैं. तो नॉट स्ट्रक्चर. सबसे पहले लेट अस कलेक्ट सर्टेन आइडियाज. ठीक है. तो दिस इज टेलिंग अबाउट द वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वेरी अनसर्टेन नेचर ऑफ लाइफ. ठीक है. तो अब लाइफ का क्वेश्चन आ जाता है, यानी यही तो फिलोसफिकल क्वेश्चन है. तो अब philosophical questions, most important thing is that we don't know how to make a story. ठीक है. we immediately try to answer the question, and when you will immediately try to answer the question, you are going to run short of the word. Fine. So you have to think about a story, that how I will come to this particular issue of change in the life, or time is changing. Fine. So time is changing. Time is a characteristic of what? Time ka characteristic I am not saying. Time is a characteristic of the world in which we live. Fine. And always in philosophy develops by dialectics. It means in order to understand the world of change, we have to understand the world of permanence. ठीक है. तो what has been one eternal question of philosophy? Eternal question of philosophy is to
understand the nature of this world and the purpose of or our place in this world. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं उससे डील कर रहा है, पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. फाइन, तो इसका मतलब है इससे थोड़ा पीछे जाइए, टाइम के बारे में, हाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग, व्हाई दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग. एडवर्सिटी एंड प्रिपरेशन का माइंड में कब आया होगा, क्या सोच के आया होगा. ठीक है, तो और उस जिसने ये सोचा होगा उसने और क्या सोचा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल इन माई लाइफ दैट एडवर्सिटी डजंट कम, और इज इट पॉसिबल इन माई लाइफ दैट गुड टाइम नेवर कम्स. तो what can be the different messages? Most of the philosophical questions, you can have one very generic style or generic way of starting the very reason for this question. ठीक है, तो एक जेनरिक इंट्रोडक्शन हम लोग लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट दैट. अब हम फिलोसॉफिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमें बात करनी है टाइम पर. तो टाइम से हम आ गए यूनिवर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए, यानी कि हम आ गए फिलॉसफी पे. तो हम फिलॉसफी के बारे में भी तो बात कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज फिलॉसफी? सर्च फॉर नॉलेज. आप देखिए आप कितना पीछे जा सकते हैं, कहां पे टाइम के कॉन्सेप्ट को समझते 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 आप किस बेस पे जा सकते हैं. ठीक है, तो समझते समझते हम नॉलेज पे आ गए, ट्रू नॉलेज. सो व्हाई आर वी सर्चिंग द नॉलेज? बिकॉज it is very natural for human, we have intellectual curiosity. Fine, so with intellectual curiosity we started understanding, and the very first very normal spontaneous curiosity is what am I supposed to do, who am I. Fine, so the human thinking, it starts with the very existential question, who am I. ठीक है, तो एक इंडियन फिलॉसफी में जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है कोहम एंड सोहम. ठीक है, कोहम मीन्स हु एम आई, एंड देन people tell you are, जैसे आइडेंटिटी इश्यू होता है, एग्जिस्टेंशियल इश्यू एंड एसेंशियल इश्यू, पीपल टेल यू आर दिस यू आर दिस. सो वो कंसेप्ट होता है सो हम. फाइन, तो वी अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स इन दिस वे. ठीक है, तो हाउ विल आई स्टार्ट दिस? तो आई विल स्टार्ट दैट मैन या मैन इज अ rational entity, and hence it is natural that we ask the existential questions. ठीक है, फुल स्टॉप. अब लिखो राइट, इन फैक्ट द ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी starts with the search for the answer of this very question.
That is, who am I? Next question. What is the place? What is my place in this universe? Next, what is the nature of the world in which we live? What is the right way of living? या what is the art of living? तो हमेशा raise certain questions. ठीक है, this can be a generic start, that this is how philosophy has started. Fine. Now you can अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे बढ़ाएं? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन से दैट these are some common questions, fine, across civilizations, across religions. For example, if I talk about the Hindu religion, if I talk about the Buddhism, then try to give certain ideas so that your story moves further and they understand that whatever you will be talking is based on some text. ठीक है, plus I am also trying to show that how this is such a important question. ठीक है, जैसे ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस सिविलाइजेशंस इसको देखा गया. इस तरीके का स्टार्ट आप बहुत सारे फिलोसॉफिकल एसेज में कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? राइट दस these are some fundamental questions of philosophy as well as all other streams of knowledge. ठीक है, right, we can see the attempt, by the philosophers or intellectuals across civilizations cultures and regions. ठीक है, तो अब नेक्स्ट में वी नो सम क्वेश्चंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if we talk about Socrates, who is known in the West as the wisest man, held that knowledge is virtue and to gain knowledge one should know oneself. That is, know thyself. Because know thyself is what?
the existential question. Is that clear? Are you, all of you are from political science or social science background? आपने सॉक्रेटिस तो पढ़ा होगा, लेकिन फिलोसोफर वर्ड की जगह वी कैन यूज इंटेलेक्चुअल, ठीक है? तो उसने ही, हम ही तो जानना चाह रहे हैं हम क्या है, कौन है, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। चाहे फिलॉसफी की बात करें, चाहे पोएट्री की बात करें, एवरीबडी, this existential question is very very significant. So we can give an example from the west, we can also give example from the east, right? Similarly, in Indian philosophy, whether we talk about Gita or Buddhist philosophy, they all aim at unraveling, open up, unraveling the mysteries of human life and providing the guidance as to how we should make sense of our life. ठीक है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है. Now most of us will be more comfortable with the philosophy in Hinduism or Vedanta philosophy. ठीक है, if you know some other you can write, but normally अब हम किसी एक फिलॉसफी से भी उस क्वेश्चन से ले सकते हैं कि सबने अलग अलग जनरल टू पर्टिकुलर, तो it is much easier for majority of us that we start this conception from the Indian from Hindu philosophy. Fine. So I am telling you, I know, so I am telling you, fine, in the sense ki this conception which I am going to tell is from where? Fine. So this is from Chandogya Upanishad. But even if you don't know, and it is not expected that you know, fine, if you know in Gita, if you know in Quran, Bible, anything, you can just take one stream. Because what we are trying, what I am trying to arrive at, I am trying to arrive at the characteristic of universe. Fine. And I am studying the universe because this is something related to my life. So characteristic of universe will be, we live in a world of, जैसे कैंट ने बोला है, वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना में, आइंस्टीन ने भी बोला है रिलेटिविटी, टाइम एंड स्पेस में, तब हम टाइम तक आ जाएंगे. तो फर्स्ट वी इन फिलोसॉफिकल एसेज try to develop a storyline. How will you tell? It is not that what you will tell. Fine. How you will tell? Where, how are you going to approach this particular question? So most of the time this approach may work for you. ठीक है. तो अब वैसे भी पेपर में यू कांट राइट एवरी फिलॉसफी, हमें वही डिस्कशन करने का थोड़ी टाइम है. तो आई विल टेक अप फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो लिखो राइट फॉर एग्जाम्पल, in, you write Indian, Hindu, whatever, in Chandogya Upanishad. Comma.
an attempt has been made to give explanation behind the origin of this world and the purpose of human life. ठीक है, तो now what is a philosophy which you can use? Fine. So normally in philosophy there are two important terms, existence and essence. So essence basically tells purpose of the life, and existence the state of being, who you are, etc. ठीक है, और ये interlinked questions होते हैं. तो what is written, what is a story about this world in Upanishads? Fine. So the story says that initially it was existence. अभी लिखो नहीं, पहले इसको समझ लो. एग्जिस्टेंस था, ठीक है. एग्जिस्टेंस मतलब केवल एक सिंगल थिंग वॉज एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस. फाइन. तो एग्जिस्टेंस मीन्स यू कैन कॉल इट एज गॉड और ब्रह्मा. ये जो फॉर्मूला है, बहुत सारे आपके रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, लगभग बहुत एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आप इसके हेल्प से लिख सकते हैं. ठीक है. तो पहले ओनली गॉड वॉज देयर. गॉड इन द सेंस ब्रह्मा. They call it as mind. They call it as a supreme being, universal being, cosmic being. ठीक है. And Brahma decided, or Brahma thought that I should not remain restricted. Fine. So Brahma has thought that my reflection, I should also grow and I should also reflect. So emerged the different creatures, etc., objects and creatures of this world. Fine. And in all, because they are product of Brahma, product of mind, they all have a reflection of Brahma. Fine. They all are a part of it. तो what is a reflection of Brahma in us? ब्रह्म क्या है? माइंड. तो रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्म हमारे अंदर क्या है? माइंड, जिसको सोल भी बोलते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इन्हीं का ये है कि ओनली गॉड हैज बीन एग्जिस्टिंग इन द बिगिनिंग. God representing Brahma, and Brahma created the entire universe and its other things. That is why everything in this universe is a reflection of God. Fine. So इसका मतलब क्या है? And this also gives the idea of unity in diversity. So gods, जैसे हेगल का है रियल इज रैशनल, लगभग ऐसा ही. तो डिफरेंट थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, दे आर डिफरेंट, but at the same time they are all part of Brahma. Brahma is mind. Mind concept is soul, Atma. Fine. So in Indian philosophy, what is Atma? Atma is a philosophical or the rational part of our personality or existence. And
Then similarly, if we talk about humans, humans in Indian philosophy are also considered, they are termed as Atma. Why we are considering it as Atma? Because this part is given more importance in Indian philosophy than the physical part. So person is described in terms of Atma, and person also has a feature of Brahma. ठीक है? And then what is the objective of life here? Yeah, what is the objective of human life? We are not discussing from our side. We are discussing on the basis of text. The objective of the life is to attain, yeah, to realize. Brahma has created this universe because Brahma wants to see himself. Brahma wants his realization in infinite forms. So the purpose is the realization by upliftment and enlightenment of our soul. And in Indian philosophy, now in this question we will not stretch too much, but otherwise you can also say that Indian philosophy also tells how we can enlighten our soul by yoga, by purusharthas, and a very systematic and very organized way of attainment of this. So realization of God, and then if it is some very abstract, you can start talking about God. So being God, the idea, we have to understand the idea behind. The idea behind is to become rational. To become rational means to give, or to give greater importance to the mind and soul in comparison. And the life cycle is, in Indian philosophy, is that the aim of a person is to attain moksha, or in Buddhism to attain nirvana. So moksha and nirvana is what? Realization of the divine in us. Means when we will become complete divine, the Hindu philosophy says that then we will become Brahma, we will become a part of it, and when we will become a part of it, then we will not be born again. Fine. So this is the philosophy that, and in Hinduism, life and death, the concepts are taken very differently, where death is not actually the end of life. Death is understood as a beginning of a new life, because you believe in the concept of rebirth. So depending upon what issues are they asking. So here, because we have to discuss something on tendency of time. Fine. So I will bring forward that this word has been created. ठीक है? तो छंदोग्य उपनिषद लिखो, राइट, वेयर, या अगर हम ऐसे भी डिबेटेबल मोड में लिखें तो अब ये तो टाइम का क्वेश्चन है इसलिए इसमें नहीं, लेकिन अगर हम डिबेटेबल मोड में लिखते हैं तो डिबेटेबल मोड में दो बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट आ जाते हैं. Those who believe that only this world is real. Fine. For example, in modern times, the existentialist philosophers like Sartre, Nietzsche, and others, and they believe in a theory of chaos, that there is no meaning in the life. Life is meaningless. And then there is this one way of life. जैसे क्वेश्चन लाइफ पर ही हो तो people have thought in two ways. Life has a meaning or life is meaningless. Fine. You can also talk about as far as the very temporal nature of human life. Even Shakespeare in his play Macbeth says that life is a tale told by an idiot. Fine.
means what is life, how can you lead, there is any specific way of doing things, this is not. So you should have just an idea. तो हम लोग फिलहाल अपने क्वेश्चन के आइडिया के तरफ इसको अभी आई विल टेक इट. ठीक है, तो व्हाट यू हैव रिटन of human life. Fine. So it explains that initially there was only the existence of Brahma, mind or soul, या अल्टीमेट जो भी कहना है आपको, ब्रह्मा, कॉस्मिक बीइंग, एंड ब्रह्मा थॉट ऑफ क्रिएटिंग his reflections, and thus this physical world comes into existence. आप लिखो राइट, सिंस इट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, या ब्रह्मा ही लिखते हैं, सिंस इट इज अ क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, the physical objects also include the element of Brahma or soul. Full stop, right? This soul is in most evolved form in humans. That is why humans are the highest creation of Brahma or mind. ठीक है, तो अब इसमें ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है. अब तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन रियल इज रैशनल टाइप ही है? तो अगर रियल रैशनल आता तो यही फिलोसफिकल क्वेश्चन में ये एक बड़ा कॉमन थीम है, हम उस तरफ भी इसको मोड़ सकते हैं. ठीक है, तो अब ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो अटेनमेंट ऑफ गॉड है. ठीक है, इसके लिए ये हम कैसे बताएं, हाउ शुड बी टेल? तो वी शुड हैव वर्ड्स. फाइन. तो what should happen in an essay? Flow should not break. So you should know the word. Tell me the word. How will I connect it? Fine. तो I can say, जब भी हम purpose of life की बात कर रहे हैं, you can always say that the Indian philosophers, they have always taken the teleological view. ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, फिर इसमें लिखो राइट, इन इंडियन थिंकिंग a teleological view is the common theme where the purpose of human life is being defined with the sense of definiteness. ठीक है, अब लिखो राइट, whether we talk about
Upanishads, or we talk about Gita, which is known as one of the most revered, R-E-V-E-R-E, revered, we are respected texts containing the ultimate wisdom, not just by Indians. हम इसके अलावा भी आपको इंफॉर्मेशन बताते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे गीता के बारे में गांधी ने हमेशा कहा कि वेन एवर आई यूज टू फाइंड द डायरेक्शनलेस और देन गीता ऑलवेज केम टू माई रेस्क्यू. तो अमंग वन ऑफ द एडमायरर्स ऑफ गीता यू शुड रिमेंबर इज औरबिंदो घोष. अमंग द फिलोसफिकल, जो इंटेलेक्चुअल एडमायरर्स हैं, हम लोग रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं तो इसी तरह वेस्ट में भी हैं, ठीक है. तो क्या लिखा है हमने? अल्टीमेट विजडम, फाइन, ठीक है. नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल औरबिंदो घोष, Tilak and Gandhi considered Gita as a text not just for the spiritual growth of the individual, but also society at large. लिखने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडियाज. कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नो ऑल दीज थिंग्स. यू कैन, तुम्हें कैसे आना चाहिए? स्टोरी बिल्ड करना आना चाहिए, ठीक है. तो लिख सकते हैं सिमिलरली इन द वेस्ट देयर आर मेनी scholars and even scientists who have recognized the wisdom. This includes Oppenheim. J. Oppenheim है ना? है? Oppenheimer, the person associated with invention of nuclear weapon. अब इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हैं शायद शोपेनहार वो भी इन्फ्लुएंस्ड था, बट आप उसको कंफर्म करिए बिकॉज फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट उतना नहीं है. लेकिन जस्ट यू कैन सी कि शोपेनहार ने भी उसको बिकॉज उसकी फिलोसफी में रिलीजन को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है. वो तो तब पता नहीं, अब जो पता है गलती नहीं करो, जितना पता है उतना हम लिख देते हैं. तो अब गीता में ह्यूमन लाइफ के लिए लिखा क्या है, ठीक है. तो लिखो राइट, फॉर एग्जाम्पल राइट गीता gives the message that this life is not permanent and ultimately
everything in this physical world goes back to the God or its origin, goes back to the God. ठीक है, तो this is how the teleology. You can also talk about Buddhism. ठीक है, तो फिर लिख सकते हैं similarly Buddhism, which is known as India's rationalist tradition, may not acknowledge the existence of God, but it also talks about, it also gives a teleological view of the life and suggest to follow the eightfold path to lead a life of virtue. ठीक है, अब ये कहीं और के लिए था, इसके डिस्कशन में नहीं जाना है, तो हम आगे आ जाते हैं इसमें. अब हम अपने क्वेश्चन से लिंक करने की कोशिश करेंगे. सो द क्वेश्चन इज लाइक, लिखो राइट द मूवमेंट, लिखो राइट द मूवमेंट we think about purpose of life, it is very natural to think about the nature of the world in which we live. ये हमारा मेन था. अब नेचर ऑफ वर्ल्ड अंडरलाइन कर लो, इसी के बारे में हमको लिखना है. वॉट एवर यू नो अबाउट इट. नॉर्मली देखो ईस्ट एंड वेस्ट में, ठीक है, तो देखो राइट राइट वेदर इट इज वेस्ट और ईस्ट. Intellectuals have tried to understand the tendency of the world in which we live. ठीक है, अब लिखो राइट, इट इज क्वाइट नेचुरल. अब इतना भी है, हमको फिर स्टोरी बनानी, स्टोरी बनाना सीखना है. वाई डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव? इसके लिए कोई बात कहिए. यू शुड नॉट बी रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज. ठीक है, तो वाई डू यू थिंक इट इज एसेंशियल? आपको क्यों लग रहा है कि I should also know about the world? आप किसी शहर में जाते हैं, don't you want to know? Because you are living, there is an ecosystem. Fine, you are a part of it. You don't live in isolation. So you are going to be impacted by the developments. Plus, you will also make your own. But before that, you don't live in isolation. There is a complete ecosystem. And it is natural to know about the ecosystem in which we are living. ठीक है, तो इस वर्ड
is a world of change and time matters. To reach to it, how you can reach to this point, ठीक है? And to reach this point you have to keep on asking question. अच्छा ये इसका तो फिर ये तो ये ऐसे क्वेश्चन करके ही फिलॉसफी में आगे बढ़ा जाता है. तो क्वेश्चंस रेज ऑन क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस, वरना एकदम लिखना चालू किया तो कंटेंट नहीं रहेगा आपके पास. ठीक है? तो और हर बात कह रहे हैं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, तो आई शुड ऑल्सो हैव स्टेटमेंट्स टू टेल. क्यों हम कह रहे हैं, आप बताइए उसको कि आप ये हम अपना सोचने का, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई थिंक अबाउट समथिंग. अगर मुझसे ये कहा जाता है कि आप जाकर के पंचायत को सक्सेसफुल बनाइए, हाउ डीपली आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट. पंचायत क्या है, कब से है, क्यों आया, क्या होना चाहिए. तो क्वेश्चंस इज व्हाट, मतलब क्वेश्चन ही फिलॉसफी है. ठीक है? और कनेक्टिंग लाइंस आपके पास होने चाहिए. तो अब इसमें आज इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा है लास्ट? It is quite natural to think about the ecosystem in which we live. ठीक है? तो अब लिखो राइट. Hence the scholars in the Western world like Heraclitus, Heraclitus, Heraclitus. अगर हेराक्लाइटस पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसका नाम नहीं लिखिए, नहीं आ रहा है तो लिखिए, क्योंकि फिलॉसफी जब भी कोई पढ़ेगा तो यहां से स्टार्ट करेगा ही. ठीक है? तो हेंस हेराक्लाइटस held that this world is a world of change. Similarly, the most renowned Enlightenment philosopher Immanuel Kant held that this world is a world of phenomena. What is phenomena? घटना जहां होती है, right? Where events keep on happening. Eventful life का मतलब क्या? Unpredictable. ठीक है? इवेंट होना कि हम उस तरफ ले जा रहे हैं. तो थोड़ा फिलॉसफी, थोड़ा साइंस कंबाइन कर लीजिए. ठीक है? तो सिमिलरली आइंस्टीन through his theory of relativity has tried to convey that this world is a world of time and space. ठीक है? अब वेस्ट से फिर ईस्ट पे आ जाओ. ठीक है? तो फिर लिखो राइट द मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस इन द ईस्टर्न वर्ल्ड be it Hinduism,
Buddhism or Jainism also talk about the lack of permanence in the world of matter and always inspire to look for the world of permanence ठीक है तो वर्ल्ड ऑफ परमानेंस अंडरलाइन करो तो वर्ल्ड ऑफ परमानेंस दे ऑलवेज इंस्पायर फॉर हायर गोल तो परमानेंस का मतलब क्या दिस इज नॉट अ वर्ल्ड ऑफ परमानेंस तो दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ टाइम टाइम क्वेश्चन में चूंकि टाइम है ठीक है एंड व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम टाइम चेंजेस फाइन सो द आइडिया ऑफ चेंज हम फिलॉसफी ऑफ टाइम पे आ जाएंगे ठीक है तो टाइम की फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व्ड देन वी विल टॉक अबाउट चेंज तो पर्सन हैज अ गुड टाइम पर्सन हैज अ बैड टाइम ठीक है फिर इसके बारे में भी यू डोंट टॉक टू द पॉइंट एक्चुअली ठीक है स्टोरी ही बनाते चलना है ओके तो व्हाट इज द लास्ट लाइन परमानेंस को मतलब समझेंगे तो हम टाइम पे आ जाएंगे फाइन तो दे हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड दैट वी शुड बी रीचिंग टू द हायर गोल अब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे डिजायर्स एंड इन सब से लिंक्ड है ठीक है तो वर्ल्ड ऑफ परमानेंस मतलब फिर क्या है देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड ठीक है spiritual development only soul is permanent matter is not permanent so we can link all these type of ideas fine so they all talk about in terms of permanence तो अब हम आ जाएंगे टाइम के कंसेप्ट पे ठीक है तो आप क्लू के फॉर्म में लिख लीजिए कि यू हैव टू नाउ कम टू द फिलॉसफी ऑफ टाइम तो टाइम के बारे में नाउ थिंक लाइक अ फिलोसोफर इन व्हाट वे टाइम इज अंडरस्टूड हाउ डू यू अंडरस्टूड एवरी पर्सन इज अ फिलोसोफर यू डोंट नीड टू बी सॉक्रेटिस टू थिंक अबाउट टाइम तुम्हारे भी लाइफ में कभी टाइम अच्छा होगा कभी टाइम खराब होगा ठीक है तो आप टाइम की कैरेक्टरिस्टिक लेकिन इंप्रेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज करिए फिलॉसफी ऑफ टाइम फिलॉसफी ऑफ लाइफ ठीक है तो ट्राई टू ब्रिंग द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज ठीक है तो अब फिर लिखते हैं वी हैव जस्ट रिटन अबाउट ईस्ट वेस्ट दोनों हो गया ठीक है